freebies, the debate on that is raging, but not just in the political circles, but also in the legal corridors of the country. So this is coming at a time when the Supreme Court has observed that promising and distribution of freebies by political parties during the poll season is a serious issue as the economy is losing money because of this. The top court has asked for a policy to be drafted on what's acceptable and what is not, and has asked the centre to draft rules for the same. So even as the court hears the case, a fierce face-off has also broken out between the centre as well as the Delhi government. Arvind Kejriwal launched a scathing attack on the centre and asked where all the taxpayers' money was going. Listen in to the war of words. केंद्र सरकार के पास अपने केंद्र के कर्मचारियों का वेतन बढ़ाने के लिए भी पैसा नहीं बचा। प्रश्न उठता है, ये सारा पैसा केंद्र सरकार का गया कहां? 2014 में लगभग केंद्र सरकार का 20 लाख करोड़ का बजट होता था। आज केंद्र सरकार का लगभग 40 लाख करोड़ का बजट है, तो ये सारा पैसा जा कहां रहा है? इन्होंने अपने दोस्तों के, इन्होंने बहुत सुपर रिच लोगों के, जो अरबपति लोग हैं, ऐसे लोगों के इन्होंने 10 लाख करोड़ रुपए के कर्जे माफ कर दिए। इनमें जितने के कर्जे माफ किए, कई इनके दोस्त हैं। To Kejriwal's allegations that has been branded as perverse by Nirmala Sitharaman, who has demanded a debate on the distribution of the freebies. In fact, the BJP also countered the Aam Aadmi Party's salvos with a fact check on each and every point that was pinned against the centre. They called it nothing but lies. Nothing wrong with the centre's financial health. Loans being written off are not waivers, and the tax on food grains was collected for long by states, is what the centre rebutted with. अगर हिम्मत है अरविंद केजरीवाल जी में, तो वो साबित करे कि जो तथ्य उन्होंने रखे वो सही हैं या जो तथ्य हम रख रहे हैं वो सही हैं। हर बात पे झूठ बोलना, हर बात पे गलत तथ्य रखना, तो पहला झूठ यही पकड़ते हैं। और अरविंद केजरीवाल जी ये प्रेस वार्ता जरूर देख रहे होंगे। अरविंद केजरीवाल जी कहते हैं ये रुपया आता है, जाता कहां है? सत्येंद्र जैन के घर नहीं जाता है, मनीष सिसोदिया और उनके परिवार के लिए इस्तेमाल नहीं होता है। प्रधानमंत्री जी ने कई दिनों से इस देश का वो मार्गदर्शन करते रहते हैं, तो उन्होंने बात रखी कि किस प्रकार से एक रेवड़ी कल्चर जब चल पड़ता है, फ्रीबी फर्स्ट कल्चर जब चल पड़ता है, तो हमने देखा है अगल बगल में भी हमारे मुल्क हैं जहां पर फैमिली फर्स्ट, फ्रीबी फर्स्ट, करप्शन फर्स्ट जब चलता है तो उनकी अर्थव्यवस्था कैसे बैठ जाती है। रेवड़ी वो होता है कि मैं चुनाव से पहले जाऊं और एक घोषणा कर दूं, परंतु केवल मुझे चुनाव में लाभ पाना है और अपने आप की ब्रांडिंग करना है, तो मैं ये अनाउंसमेंट तो कर दूं, परंतु जब उस अनाउंसमेंट को पूरी करने की बारी आती है तो मैं उससे पूरा यूटर्न लेकर भाग जाऊं। ये पिनोकियो ऑफ इंडियन पॉलिटिक्स ने फ्री शिक्षा, फ्री पानी, फ्री बिजली, फ्री स्वास्थ्य कुछ नहीं दिया। हाँ, दिया है तो फ्री करप्शन, फ्री पोल्यूशन, फ्री विज्ञापन, फ्री तुष्टीकरण, फ्री नशा। अरविंद केजरीवाल अब लोगों का ध्यान बटाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि वो जानते हैं जो करोड़ों रुपए का घपला हुआ जिसमें अब सीबीआई इंक्वायरी कर रही है, ये सारी वो नौटंकी क्यों कर रहे हैं, वो झूठ इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि बुरी तरह फंस चुके हैं। उनको दिख रहा है कि बहुत जल्दी शिकंजा जो उनकी तरफ चल रहा है वो सबसे पहले अब उनके डिप्टी सीएम पे जाएगा, और जब मनीष सिसोदिया पे जाएगा वो सच उगलेगा और अरविंद केजरीवाल पे भी जाएगा, और वो इस सारे माहौल को बदलना चाहते हैं। भोला बनकर झूठ बोल रहे हैं अरविंद केजरीवाल जी। अब आप इस केस से बचने वाले नहीं, कितना भी झूठ बोलिए, बहुत जल्दी ये शिकंजा आपकी तरफ जाएगा और जो आपने चोरी और घोटाले किए हैं उसमें आप पे कार्रवाई होगी। उनके खुद के मुख्यमंत्री यहाँ पर आकर मोदी जी के सामने भीख का कटोरा लेकर खड़े होते हैं, कहते हैं कि हमको 1 लाख करोड़ रुपए दे दो आप। हमने पंजाब में लोगों को फ्री भी कमिट कर दिया, हम दे नहीं पा रहे, हमको 1 लाख करोड़ रुपए दे दो। वो केजरीवाल साहब बोल रहे हैं, वो केजरीवाल साहब बोल रहे हैं जिन्होंने दिल्ली में एक फ्लाईओवर नहीं बनाया पिछले 7 साल में, एक नया स्कूल नहीं बनाया, एक नया कॉलेज नहीं बनाया, एक नया हॉस्पिटल नहीं बनाया। वो केजरीवाल साहब बात कर रहे हैं। देश बिल्कुल ठीक है और अच्छे हाथों में है, और सारा देश जानता है कि मोदी जी के साथ देश तरक्की कर रहा है।
Samya is with us on the phone line. Good morning to you, Samya. Well, this is something that even the Supreme Court has taken cognizance of. And when it comes to the Election Commission for India, what role can it play when it comes to political parties announcing freebies just before the polls? Well, Amita, there is a manner in which the Election Commission puts a cap on the kind of announcements that are being made by political party right ahead of the elections. But this war of words has been ensuing between the government of the day and the Aam Aadmi Party for a while now, especially ever since Arvind Kejriwal managed to form the government in Punjab with several announcements of freebies. But the fact remains that he wants to take the Delhi model of, his free electricity up until certain units and the water bills being completely foregone in a way to carry this whole Delhi model to Punjab. And now he is hitting the Prime Minister's home turf in Gujarat. So it has become more of a perception battle of sorts, because the Prime Minister brought his Gujarat model across the country before he became the Prime Minister. And now Arvind Kejriwal is trying to counter that in a sense by using these freebie announcements, which is definitely being countered not only by political party leaders like Nirmala Sitharaman and the others, but even the Supreme Court has asked them to try and balance it out and be cautious in the way they are making these tall claims. Of course, they are citing the example, the BJP leader citing the example of what happened in a neighboring country in Sri Lanka, which definitely had several populist measures and these freebies announcements, and eventually it went down in a very sorry democratic state of affairs over there in Sri Lanka, and that shouldn't have been repeated over here. However, the Aam Aadmi Party maintains that the BJP seems to be rattled by Arvind Kejriwal's popularity both in Gujarat and in other states of the country, and that's the reason why this is the only way they want to try and counter it, by calling him out and criticize him. But that is not going to deter him. He also puts forward the example of Delhi, where he feels that in the last 2 consecutive terms that he has won as Chief Minister, the freebies that were announced still remains intact. There have been several beneficiaries of it, and that hasn't really incurred any losses to the state exchequer per se. And this is what he has been trying to uphold and say this is the very same Delhi model which he wants to take forward to Gujarat as well. Remember, the elections are going to come up in these states very soon, and that's the reason why these political, stalwarts are trying to lock horns over the freebies. And we have to wait and see whether the Election Commission takes cognizance of what Supreme Court has said, and they actually come up with some sort of a circular to put a cap or some sort of a directive or a warning of sorts in the kind of announcements that are being made. That's right. Samya, do stay on with us, because it was a big statement coming from the Supreme Court saying the economy is losing money because of these freebies, but also saying there should be a balance between welfare schemes as well as the economy's health. But the war of words between the political parties has been going on. Arvind Kejriwal had first made these allegations saying there's nothing wrong with freebies. This is what the taxpayers should be getting for the taxes they pay. केंद्र सरकार के पास अपने केंद्र के कर्मचारियों का वेतन बढ़ाने के लिए भी पैसा नहीं बचा। प्रश्न उठता है, ये सारा पैसा केंद्र सरकार का गया कहाँ? 2014 में लगभग केंद्र सरकार का 20 लाख करोड़ का बजट होता था। आज केंद्र सरकार का लगभग 40 लाख करोड़ का बजट है। तो ये सारा पैसा जा कहाँ रहा है? इन्होंने अपने दोस्तों के, इन्होंने बहुत सुपर रिच लोगों के, जो अरबपति लोग हैं, ऐसे लोगों के इन्होंने 10 लाख करोड़ रुपए के कर्जे माफ कर दिए। इनमें जितने के कर्जे माफ किए, कई इनके दोस्त हैं। Well, this is also coming at a time when the Supreme Court has expressed concern, saying that this is something the political parties would not like to discuss it in Parliament. Thereafter, a thorough probe and a discussion is needed on this issue when it comes to freebies being given away by political parties. With that, we head into a short break. You're watching the Morning News Hour.